Calculate the ratio of energies of helium plus for first and second excited state. First excited state means see electron where it is right now in n equal to 1. This is the ground state बोलते हैं इसका ground state. First excited state means first time jumping. Sir, where it is jumping? So many are there. We have to consider only next level. Okay, excitation state means इधर से fourth में भी excitation state ही होता है. लेकिन first excited state means next level. It enter into next level. Okay, so initially first is there. First excited state means it going to second level. Then again second excited state. That means electron was here. Again second time excitation. Second time also next level. अभी 10th क्लास होने के बाद इमीडिएटली 12th में नहीं जाते. 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th. So like that, here electron also jumping into next second, then third, then fourth, like this. Okay, second excitation state. So I written here first excitation state means the electron is present in the second level, second shell. Second excitation state means the electron is present in third shell. You can see here, it is third shell. But after that, apply the formula. Formula you have to remember. Yesterday we did the derivation. Okay, if you are not remember that all derivation, no problem. Just at least final answer. This formula you have to remember. Okay, 13.6 into z square by n square electron volt. Sometimes in the options they will give joules, calories. So in that case, 1 electron volt equal how many joules? So those things also I given you yesterday. So you need to remember. Plus in the ratio, always the constant values will get cancelled. So 13.6 again 13.6 will come get cancelled. Z atomic number only helium. So same. That equal to 2, it will get cancelled. I am not taking these two terms, only n square, that is inverse. Okay, that means E2 के लिए नीचे n2 square, E3 means ऊपर n3 square. n3 means nothing but n equal to 3. 9, 3 square, 9, 2 square, 4. So 9:4 answer. Next, calculate the energy of lithium plus 2 atom. Lithium plus 2 atom. Lithium plus 2 atom. For second excited state. For second excited state. Okay, but it is not ratio. Direct E, same formula, minus 13.6 into z square by n square electron volt. Okay, now substitute those values and tell me the answer. Online students not giving answers. Sorry? 21.6. Do it again. Minus 59 point something. Okay. Now tell me what is the z here? Z equal how much? 3. What is the n equal?
n इक्वल सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये तो अभी तक किया ना। पहले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड के लिए क्या लिखा था n इक्वल टू 3, अभी क्या होगा n इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इट कैंसल, व्हाट इज आंसर? कहां प्रॉब्लम हो रहा है? I'm giving 1 minute time but you're telling different answer, पूछ लो तो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। कहां स्ट्रगल हो रहा है? Where you're not getting? Z में कंफ्यूजन है, N में कंफ्यूजन है, कहां कंफ्यूजन? बट Z में सी किसको भी Z में कंफ्यूजन है, मतलब वो कंफ्यूजन नहीं है, वो बिल्कुल पढ़ रहे नहीं है। स्टार्टिंग से बोल रहे मैं ब्रिज कोर्स से एटॉमिक नंबर 1 to 30 एवरीवन यू नीड टू लर्न, ये तो 1 to 10 है बीच में, 1 to 10 तो एवरीवन शुड लर्न, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। लास्ट बॉस केस 20 तक तो लर्न करना ही है सीरियल, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कंटिन्यूअसली। एटॉमिक नंबर मतलब अब मैं 16 पूछे तो सल्फर ऐसा बोलना है, ठीक है। फास्फोरस बोले तो 15 एटॉमिक नंबर, एटलीस्ट 20, इतना मुश्किल नहीं है, इजीली यू कैन डू। सो मैक्सिमम गैसेस है वो तो 1 to 10 तो एक दिन में हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो डेली फ्यू एलिमेंट्स विद इन 2-3 days यू कैन डू। नेक्स्ट question number 3, if the potential energy, if the potential energy of an electron is minus 6.8 electron volts in hydrogen atom, then find out kinetic energy and total energy. Find out kinetic energy and total energy. Okay, solution. What is the relation between potential energy and kinetic energy? Potential energy and kinetic energy कल derivation किया था last, see the notebook and tell me kinetic energy and potential energy का difference. Relation you can say. Both are equal or half or double. Not written. I will show you in the notebook. ठीक है, फ्रॉम योर नोटबुक टेल मी टोटल एनर्जी का फार्मूला, लास्ट फार्मूला क्या आया था वो 13 के पहले
minus 1 by 2 into kz e square upon, sorry, n square h square. इसके पहले उसके बाद next point where you written total energy. See, in the derivation point you written that total energy equal potential energy plus kinetic energy. Derivation type, right? So last to third step. What is written here? Potential energy equal minus k z e square by r plus half mv square, ठीक है. Next half mv square के जगह पे क्या लिखा था? Half k z e square, k z e square by r. It is there in your notebook. So potential energy and kinetic energy, kz e square by r, kz e square by r same, लेकिन potential energy ज्यादा है, ये तो half इतने. Of course ये तो negative है तो positive है ना. Kinetic energy is half, मतलब potential energy suppose 10 is there, kinetic energy कितना होगा 5 है ना. So potential energy equal minus half. half. Okay. Potential energy पे minus रहता है ना, minus, right. Understood this? I written from the derivation only. Potential energy and kinetic energy. You can see the formulas. Kz e square by r, kz e square by r. You say here one is there, here half is there. Okay. So kz e square value suppose 10 है, मतलब p क्या होगा -10 होगा, k क्या होगा हाफ होगा, हाफ मींस 5 होगा है ना. The formula is p equal, the relation between p and k is p equal to minus half k. Okay. और टोटल क्या आ गया था इधर हमको, the minus means minus 1 by 2, this z e square by r आ गया. So z e square by r का हम मान लिया था 10 वैल्यू. So p तो क्या होगा -10, k होगा +5, टोटल एनर्जी क्या होगा -5 है ना. So this total energy and kinetic energy both are same numerically, sign convention different. Total energy equal minus k, you can see kinetic energy का भी 5 numerical, total energy also 5 numerical, sign convention different. इसको पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव. सबसे ज्यादा कौन है? पोटेंशियल एनर्जी. Got it? So every time no need to write this. वो कहाँ से आया? I am showing from the derivation. Now you need to remember total energy, kinetic energy numerically equal. Kinetic energy, it is always positive. Kinetic energy only positive. Potential energy and total energy both are negative. Okay. Now you apply this. Potential energy is given -6.8. So kinetic energy we need to calculate now. So that implies kinetic energy equal 2 into p. 2 into p. Minus is there. So minus into minus, -2 into potential energy -6.8. So minus into minus plus. How much? 16, 13. 13.6 plus 13.6. वही है ना? Understood or not? अरे तो formulas I explained you. If you not understood, leave it.
याद रखो फार्मूला बस. लॉजिक ओनली वन थिंग. तो लॉजिक समझ गया, देन कभी भी कंफ्यूजन हो गए तो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट, डिराइव दैट. उतना लॉजिक नहीं है सर, मेरे को मेमोरी पावर बहुत है, जीबी टीबी है, कोई बात नहीं, याद रखो बस फार्मूला. इफ यू रिमेंबर द फार्मूला बस इनफ. Potential energy equal minus of kinetic energy. अच्छा, right. Kinetic energy equal to 2 into potential energy. Then the answer. Then total energy asking. Total energy. Total energy equal to minus 13.6. Yes sir. वो total energy को फॉर्मूला से क्या होता, कुछ गलत किया? बस आएगा ना सर, फर्स्ट आएगा. Kinetic energy ज़्यादा हो गया potential. Potential energy equal minus. Kinetic energy is half potential energy ना सर. फिर ये कैसे है? Potential energy is 2 kinetic energy. Potential energy equal to 2 into kinetic. 2 into kinetic energy. वो डेरिवेशन में वही था. माइनस माइनस हाँ. अभी तो हो गया है. Kinetic energy equal potential energy by 2 minus. Then minus into minus 6.8 by 2. Answer अभी 3. Potential energy. Then minus 3. Minus 3. Minus 3. See, total energy, kinetic energy numerically same है ना, ये तो स्टेटमेंट सही है. Here उल्टा लिखा था. Potential energy is maximum. So theoretically I told but written wrong. Potential energy is more numerically compared to kinetic energy. Next, last question. Calculate the radius ratio last time we did energy ratio, now radius ratio. Calculate the radius ratio of second excited state of hydrogen. Radius ratio of second excited state of hydrogen and first excited state of lithium and first excited state of lithium plus 2. Lithium plus 2. Yes, this is the lithium plus 2. Radius. What is the formula for radius? R equal 0.5 into, देख के बताओ लिखा है क्या फार्मूला रेडियस
He's searching the notebook. It is there or not? I will check the notes. N square by Z. Applied. इसमें atomic number तो clear है hydrogen and lithium का already written and excited state also I explained you. Here first excited state, here second excited state. N value, Z value varying. ठीक है बस just numerical mathematics, simple mathematics. Do it. Write the question and answer. Hmm. 27 4 27 upon 4. What is that first one? Hydrogen upon R lithium 27 by 4. Okay, write one more question. If the total energy of electron is if the total energy of the electron is minus 1.51 electron volts. Again I am writing here minus 1.51 electron volts. Then find out Ke potential energy, kinetic energy and orbit radius. These two already we calculated. The last question. Now extra orbit radius, that means r, and velocity of the electron in that orbit. So two extra again there, like radius and velocity, two things we have to calculate. Okay, but all four
Try to calculate. Already written the relation between potential energy and kinetic energy, total energy. If you remember the formula directly, you can write it. See, total energy, how much it is given? Minus 1.5 electron volt. Total energy and equal to which one? Kinetic energy. Total energy, kinetic energy numerically same. That means kinetic energy is nothing but 1.5 electron volt. Since you can write kinetic energy equal to minus total energy, minus of total energy, minus in the minus. Okay. Then potential energy equal kinetic energy. Minus of 3, 3.0, 3 electron volts. Okay. These three questions over. Next, orbit radius. Orbit radius कैसे? ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल अरे 0.5 अभी तक लिखा ना 0.5 n square by z. So एलिमेंट का नेम दिया नहीं दिया, मतलब z भी पता नहीं, n तो वही तो कैलकुलेट करना है, r वैल्यू तो वो भी पता नहीं, राइट. सो ये फार्मूला से हम कुछ नहीं कर सकते. देन एनर्जी का फार्मूला बताओ. minus 13.6 n square by z square. So here element तो दिया होगा, the total energy of hydrogen in hydrogen. If the if the total energy of the electron is 1.51 electron volt, here one more information is there. 1.5 electron volts in hydrogen atom. Here is missing line. In hydrogen atom. In hydrogen atom. Okay. In hydrogen atom. So Z वैल्यू तो पता है, लेकिन हाइड्रोजन में विच लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो तो पता नहीं. N वैल्यू we don't know, but here we know that E, we know Z value, but N value we don't know. We can calculate. Now do it. E value how much? E means which E will take among these three? Total energy. Total energy minus 1.5, that equal to minus 13.6 into n square तो पता नहीं, z square that means 1 square. So minus minus get cancelled. Now n square equal 1.5, that means 15 by 136. Yes, you can do it. हाँ n equal अंडर रूट हो जाएगा. बताओ अप्रॉक्सीमेटली कितना है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोल रहा था? जो मैं पहले वही लिखा था ना. नहीं आपने भी वही लिखा था.
1.5 मतलब 15 I can write 15 by 136 that equal 1 by n square. ठीक है करो that implies n square equal to 136 by 15. 15 which table we can get it 59 जाओगे ना अरे 135 है तो ठीक है ना ले लो तो फिर क्या होगा 9 मतलब n equal to 3 वो तो 3.1 या 2.9 वाला तो होगा ही नहीं ओके n तो शेल है ना शेल तो 1 2 3 4 ऐसा रहता है 2.1 शेल 2.2 शेल तो नहीं है बस 136 135 तो सेम है n equal to 3 ठीक है ऑर्बिट रेडियस चाहिए हमको तो n आ गया अभी रेडियस इसमें सब्स्टिट्यूट करो हाँ हाँ n equal 3 आया n equal 3 आया वो तो n equal 3 substitute in the radius formula 3 square मतलब 9 9 by 1 okay 9 only 9 into 0.5 4.5 that equals 0.5 into 9 square by 1 square sorry 3 square no? 3 square by 1 square 3 square means 9 9 into 5 4.5 what it is unit angstrom units radius तो radius 4.5 4.7 चलेगा नेक्स्ट टेल मी वेलोसिटी का फार्मूला फाइनल फार्मूला बताओ क्या है वेलोसिटी हाँ 2.18 into 10 power 8 z by n units centimeter per meter centimeter per second हाँ z तो एटॉमिक नंबर 1 था n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो 2.18 into 10 power 8 1 by 3 7 ja 0.7 approximation 7 means 10 power 7 हो जाएगा approximate answer 7 into 10 power 7 got it मतलब एक वैल्यू पता है तो तीनों में कोई भी either total energy या potential energy या kinetic energy तीनों में कोई भी एक पता है तो 5 things we can calculate 5 things 3 energies shell 4 radius 5 velocity 6 these many things we can calculate okay here the logic is simple formulas you have to remember ऐसा ऊपर नीचे नहीं लिखना है ठीक है मैं लिखा था फिर भी So based on these formulas, so many questions are there from the material. Everyone take that school material and solve it. Okay, if you have already some other material, that's up to you. I'm not forcing you to take this one, but if you follow all same material, that's better. Okay, hundreds of questions available in this. Total exercise 1, 2, 3, 4, 4 exercises including in-text questions, solved questions. See 80 plus 60, 80, 160, 160, 160, 240. Around 260 questions are there in this material. 260 questions, exercise only. उसके पहले और
40 questions होगा, around 300 questions. So if you solve all 300 questions, maximum all concepts will cover. Okay. So after this material, you need to do only PYQs. PYQs बस NCERT textbook 3-4 बार तो learn कर means read करना है बस. You have to do revision properly. That is enough. Okay. So like that, each and every chapter you need to do कम से कम 200 to 300 questions. Least बता रहा मैं कभी भी least. ये मटेरियल फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली 300 क्वेश्चंस तो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन. और एक एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट लेवल थोड़ा इजी होता है क्योंकि ऑलरेडी फार्मूलास याद रहता है. ठीक है. स्टार्टिंग इट विल टेक मोर टाइम. ओके. फार्मूलास याद नहीं आता है, याद आ गए तो भी कुछ कंफ्यूजन होता है. और न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम में देखो इधर मैं ऐसा पूरा ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था. ओके. सो 3 7 21 बस इतना लिया था. हमको एमसीक्यू में क्या है तो 4 ऑप्शन में तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर. 100% ऑफ 4 ऑप्शन में एक होगा, 17 होगा, नहीं तो 70 होता है, नहीं तो 9. ओके. 6.9 7 7.1 इट नेवर गिव लाइक दैट. तो इतना वेरिएशन स्मॉल वेरिएशन में नहीं होगा. एक 7 है तो दूसरा 9 होगा, तीसरा 3 होगा, नहीं तो 70 होगा. पावर्स में चेंज होता है 10 पावर 7 10 पावर 8 10 पावर 6 like that. Okay. So easily you can identify or numerical means divide multiplication also, averagely also you can do, but that thing you will get by the practice only. If I say इधर 13.6 को 13 मान लो, नहीं तो 14 मान लो. ठीक है. मानते हैं स्टार्टिंग में sometimes you will get say correct answer, sometimes you may not. But if you practice the questions randomly 13.6 को हम 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. 13.6 को हम 10 या 15 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. वो कब? प्रैक्टिस ज्यादा होने के बाद तब पता चलता है. सपोज मैं 13.6 को मैं 10 मान लिया, सपोज मेरे को आंसर आ गया. आंसर आने के बाद 100% वो आंसर से ऊपर वैल्यू आंसर होगा. सपोज ऊपर 2 वैल्यूज आते हैं, देन अगेन इजीली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. सो मतलब ऑप्शन कितना वेरिएशंस है. सपोज एक है 20, एक 200, एक 2000, एक 2 लाख ऐसा दिया. इजीली ऐसा 13.6 को हम 10 मान के भी कर सकते. ऑप्शन में दिया था एक तो 90, एक 95, एक 100 एंड 105. मतलब वेरिएशन बहुत कम था. उस टाइम में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा. और 13.6 को हम तब मानना है 13.5 मान सकते हैं. इवन 14 या 13 वी कैन नॉट टेक. Okay. So like that. That is the thing we can get by practice only. वो shortcut ऐसा राउंड अप करने वाला चीज we cannot teach. सजेशन दे सकते हैं. ठीक है. If I say 13.6 को 13 मान लो, मतलब अभी भी तुम वही कर दे, लेकिन इधर वेरिएशन बहुत कम होगा, then you will get some other answer. Okay. Sir, मैं always I will take as this value. then टाइम सफिशिएंट नहीं होता एग्जाम में. 13.6 अभी रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, सॉरी और गैस कांस्टेंट वैल्यू 0.0821. इफ यू टेक ऑल दीस 3 वैल्यूज इट विल टेक मोर टाइम. ऐसा नहीं लेना है, टोटल वैल्यू नहीं लेना है. ठीक है. वो वेरिएशन के हिसाब से लेना है. वेरिएशन ज्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, मैं 8 into 10 power minus 2 लिखता हूँ. और 21 को निकाल दिया तो 0.8 है. 10 power 10s को इजीली वी कैन डू. अभी 8 टेबल से करना है. ओके. सो दैट थिंग यू विल गेट बाय प्रैक्टिस ओनली. कब तक है पीरियड? 2:30, 2:40, 2:50 तक.
2:10, 40 minutes is there. Yesterday you written this minus 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो लिख दिया. उसके बाद जोल्स एंड एल्प्स में भी लिखा था वैल्यूज एनर्जी वैल्यू joules and joules में लिखा था. So the relation between potential energy and kinetic energy and total energy वो तीनों तो समझ गए ना आप. Next heading, merits of Bohr's theory. Merits of Bohr's atomic theory. What happened? Merits of Bohr's atomic theory. Bohr's concept. Bohr's concept explain Bohr's concept explain hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. Energy of electrons. Electron and atomic radius. Ionization energy. Full. What do you write it? Ionization energy. Okay, these are the merits. Next, demerits. Demerits. It does not explain. It does not explain. It does not explain the spectra of atoms. The spectra of atoms having more than one electron. More than one electron. More than one electron. Have you observed that last 2-3 क्वेश्चन we solved? One is helium plus का solve किया था. दूसरा lithium plus 2 का solve किया था. मतलब first one hydrogen. These 3 questions we solved. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 1. Here 1 electron. 1 electron. सब 1 electron के लिए था. ठीक है. That's why it is demerit. It doesn't explain the spectra of atoms having more than one electron.
Next, it could not explain. It could not explain Zeeman, Z double E N double E Zeeman MEA Zeeman and Stark effect. Zeeman and Stark effect. Zeeman and Stark effect. What is the Zeeman effect and Stark effect? Is there any Zeeman effect? Splitting splitting of spectral line in the magnetic field. The magnetic field. Stark effect. Splitting of spectral line in the electric field. See what we discussed. These are the shells. Okay, electron while falling down, so energy is released. Okay, topic over. Now I am explaining. Don't write this. Okay, this energy level, suppose how much is 1000, 900, 800, 600, सब माइनस. ओके, गैप सेम नहीं है, ऐसा भी नहीं, गैप तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है. सो 600 से 1000 में आ गए सपोज इलेक्ट्रॉन फॉलिंग डाउन, हाउ मच 400 joules ऑफ एनर्जी रिलीज. सपोज 900 से 1000 में आ गया, इट इज रिलीजिंग 100 joules ऑफ एनर्जी. वेरी सिंपल, द डिफरेंस इट इज रिलीजिंग. Do you know that Bohr'S spectrum? Spectrum means what? When the light passing through the prism, light when passing through the prism, it is splitting into different parts. Okay? Bohr'S, V down होता है, up. Bohr'S होता है, right? Red color. So ये Bohr'S मतलब से ये different wavelengths are there. So here 400 nanometer is there, means I am taking here hydrogen light, just like lamp. Okay, so this light glowing means what? It is giving energy. So that energy I am taking in the spectrum. I am taking in the spectrum, right? So 400 energy spectrum giving one line. Maybe 101 is giving one line. Maybe बीच में कुछ है, तो 2-3 lines are giving. This thing we are expecting. ये तो practically भी proved था. These energy levels are forming. Sir, why these are lines are forming? Because a particular wavelength is emitting. The particular wavelength showing some color, some lines on the spectrum. You understood this much? Okay, here electron falling down from different energy levels. जरूरत नहीं है वो तो सेकंड से ही नीचे जाएगा, वो तो फोर्थ से भी नीचे आ सकते हैं, फोर्थ से थर्ड में भी आ सकते हैं, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट. तो हर एक लेवल का डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आर फॉर्मिंग. ये प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड था. कुछ लाइंस फॉर्मिंग. ओके, दिस एनर्जी लेवल एंड दिस एनर्जी लेवल्स आर मैचिंग.
ओके फाइन, दिस मच क्लियर. कौन एक्सप्लेन किया था? रुदरफोर्ड, सॉरी, बोर्स. Bohr's explained, according to his atomic theory, so these are the shells are there, electron revolving in a fixed orbit. When energy gaining, the electron jumping into next levels, that is called excitation state. Then the electron is unstable there at a higher stage, it is falling down. While falling down, it is emitting the light. The emitting light has a certain frequency, certain wavelength. ऐसा नहीं होगा 400 वाला 400 401 401 410 420 420 ऐसा सब नहीं होगा, फिक्स्ड होता है. ऑलरेडी वी डिस्कस these energy levels, all energy levels are not exist, only few energy levels which are equal to mv are equal to nh by 2 pi. ये ऐसा नहीं है, ऐसा hundreds of lines ऐसा नहीं है, only few lines are there. Okay, so many lines I will take hundreds of lines. There is no hundreds of lines. Only few lines are there. Okay, which lines those are? Which are directly proportional to h by 2 pi value. वो भी whole number में होना चाहिए, fraction में नहीं होना चाहिए. ठीक है? Those values are there. Right, those values are there. He explained. Okay. Then electrons revolving, energy taking, going up while falling down, energy releasing. That energy is showing some lines in the spectrum. Practically also proved. Fine. लेकिन same experiment when they observed in the electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्टिंग में बताया ना, एक तो ट्यूब होता है, इसके ऊपर प्लस एंड माइनस रखे, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो हाइड्रोजन ट्यूब है, ठीक है, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन आउटसाइड हमने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिया, मतलब ये फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. उस टाइम में भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था, लाइट फॉलिंग थ्रू द पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन फॉर्मिंग द लाइंस, लेकिन these lines furtherly splitting into smaller lines. This is one band. Here also ये तो sketch है, इतना बड़ा होता है, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, लेकिन this big line, the thick line is splitted into small lines. इसको बोलते हैं band, इसका बोलते हैं लाइन. A few lines becoming a band. ओके, सपोज एक 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला है, तो ये हो गया एक 1 मिलीमीटर वाला बन गया. ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ? पहले ये तो कब हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया. इसका बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया. दिस वन इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अभी मैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, अगेन से स्प्लिटिंग अगेन लाइंस, उसका नाम दे दिया जीवन इफेक्ट. अभी ये बोर्स he could not explain why the lines furtherly splitting, वो लाइन क्यों बन रहे उतना तो बताया, लेकिन आगे नहीं. मतलब एक साइंटिस्ट, एक ह्यूमन लाइफ में बस इतना रिसर्च हो रहा है. थॉमसन टाइम में क्या था? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, जस्ट ओरली ऐसा बताया, वो तो एक फ्रूट जैसा होता है, वाटरमेलन शेप में. उसके बाद रुदरफोर्ड किया था एक्सपेरिमेंट. ही टोल्ड न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, लेकिन ही कुड नॉट फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा. तो दैट इलेक्ट्रॉन हाउ इट इज स्टेबल, ही कुड नॉट एक्सप्लेन. देन उनका जनरेशन, उनका लाइफ तो हो गया, कार्ड आ गया, आके बोर्स ही टोल्ड दैट एनर्जी लेवल्स होगा, एनर्जी लेवल में इतना इतना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते, और these lines are forming because these are getting excitation and de-excitation. बस इनका लाइफ में उतना हो गया. फिर आगे नेक्स्ट आएंगे बाद में. तो अभी क्वेश्चन मार्क्स ये तो पेंडिंग में है. ये तो लाइंस फर्दरली स्प्लिटिंग क्यों, अभी इनके पास तो आंसर नहीं है. ठीक है, दिस इज द थिंग्स. Zeeman effect and Stark effect means understood now. Stark effect and Zeeman effect means simply one line splitting of spectral line. Spectral line क्या होता है? ये splitting magnetic field and electric field.
इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी? नो आइडिया। Spectroscopy means subject which deals about the all spectrum, these all spectroscopy. Just like it is a chemistry में एक part. It is not a chemist. Physics में भी आता है spectroscopy. ठीक है? It deals with the subject, is a part of the subject. Now spectrum. What is the spectrum? See, generally the light passing through the prism. This white light, generally sunlight also, you can take any bulb light you can take. This light is while passing through the prism, it is splitting into different regions. V I B Virgia. Right? Always violet color is down. Why? Less less wavelength. Less wavelength. Violet का wavelength ऐसा होता है, ऐसा. So less wavelength is there, of course frequency to more, right? So which has less wavelength, those can scatter deviation more. Okay, that's why coming down. This is the reason. This is the reason the violet is traveling less distance and red is traveling more distance. Red is traveling more distance. It cannot scattered easily by any dust particles, any moisture, water molecules in the air. It is traveled more distance. That's why it is used as a danger symbol. Danger पहले पता चल रहा है, नजदीक आने के बाद पता चले तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? If you know more from long distance, then we can manage something, right? So energy कैसे होगा? Energy, which one has more energy, red or violet? Already I told last classes. Violet has more energy. Violet has more energy. E equal to h nu. That equal to h c by lambda. When lambda is smaller, E is more. When lambda is more, E will be less. Okay. So this visual, where we are observing, if you keep on a screen, yeah, paper, the screen. This is the spectrum. This is the spectrum. Okay, एक photo we can say screen या photographic plate. Okay, or paper, whatever we are giving. Indirectly the photo frame. Okay, suppose if you are taking photograph, that photograph, that is the spectrum. Spectrum of yours face. Okay, so this here, this one, you know that prism. Then here light, could be light. Generally, candle you can take, normal light you can take, but LED and laser lights, LED as well, and a few more hydrogen light, helium light, neon light, krypton lights. Those things you cannot take. You should not take. You can take it, but you don't get the Vibjar colors. उसमें Vibjar colors नहीं होगा. Okay, normal candle में भी रहता है, normal light में भी रहता है. Okay, so vehicles में for focus nowadays they are using hydrogen lights. ज़्यादा powerful होता है. ठीक है? So those are giving only few lights. All Vibjar colors cannot give. Vibjar देना है तो इसका wavelength around 350 to 750 nanometers. ये पूरा range में होना चाहिए. ठीक है? Right. Here
emission spectrum and absorption spectrum. Two things are there: emission spectrum and absorption spectrum. Today I will explain. Tomorrow I will give the notes. Emission spectrum and absorption spectrum. Emission in the word only there. So here, if I take one sample, where I am taking the light passing through the sample. What happened with it? Light falling on the sample means कुछ molecule या water some कोई भी एक चीज sample उसके बाद remaining light falling on the prism then passing into the screen. So this sample is suppose absorbing 400 to 450 nanometer light, then 500 to 520, then 700 to 710 light. Suppose these are absorbing. So क्यों ले रही है? ये sample को कुछ तो molecule होगा. The molecule will take, each molecule will absorb the different wavelengths. Which wavelength which molecule will take depends on their bond length and bond strength. उस पर depend होता है. ठीक है. Suppose ये मान लिया मैं ये 3 range wavelengths absorbed by sample. अब यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी ये स्पेक्ट्रम में क्या होगा 400 to 450 मतलब इधर एक ब्लैंक ठीक है और 500 to 520 somewhere here one blank 700 to 720 मतलब इधर एक ब्लैंक white remaining सब तो कलर है. So for showing the blank I am taking ब्लैंक कहाँ आया था इधर तो ब्लैंक है सर ब्लैंक आ गया तो दूसरा कलर ले रहे फिर तो व्हाइट में हाउ कैन आई शो यू. So this area में there is no color. I given you color but there is no color actually. ठीक है. So why these colors are missing? Because this wavelength relevant light absorbed by the sample. So now this spectrum is known as absorption spectrum. This spectrum is known as absorption. Means after some light absorbing a remaining light का spectrum है ये absorption spectrum. Clear है इसमें कुछ doubt है? Normal spectrum continuous light is there वो विबज्योर कलर था उसका बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब कंटिन्यू देयर इज नो गैप. वॉयलेट इंडिगो ब्लू ये ग्रीन येलो ऑरेंज सब तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देयर इज नो गैप इन बिटवीन एनी टू कलर्स कंटिन्यूअस. अभी क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इट इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस. एंड वन मोर ये इधर क्या हो रहा है इधर डिसकंटिन्यूअस तो हो गया ठीक है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से अब्जॉर्प्शन की वजह से इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस भी है एज वेल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आल्सो. टू नेम्स एक तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए था लाइट अब्जॉर्बिंग. डिसकंटिन्यूअस इसलिए था बीच में कुछ गैप्स आ गए डिसकंटिन्यूअस. वो पहले वाला विबज्योर वाला क्या था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ओके राइट राइट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हो गया. नेक्स्ट नाउ सेम स्पेक्ट्रम में आई एम रिमूविंग दिस लाइट. अभी क्या होगा सैंपल तो पहले रिसीव किया था कुछ लाइट कौन था वो ये 400 500 700 वाला ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर स्पेक्ट्रम. हियर आई विल गेट द कलर्स ओनली इन दिस एरिया. This area is one color is there, this area is one color is there and this area is one color is there. Remaining पूरा blank.
नाउ ये स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला, तो ये क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों कंबाइन करें तो यू विल गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें कहां कहां गैप है, इधर उधर वो रीजन में कलर होगा बस, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सिंपली ये तो पूरा टोटल लाइट which are all colors are coming. So first the sample is received some wavelengths, then again same wavelength emitting, that's only those same wavelengths giving this. If you join these two you will get one perfect continuous spectrum, that's all. Okay, names क्या हो, ये भी discontinuous के अंदर आता है। discontinuous में दो हो गया, एक तो emission, एक दो absorption spectrum. Absorption spectrum and emission spectrum both are discontinuous spectrums. Absorption time में ये है, emission time में मतलब अभी emission के लिए दूसरा और एक एग्जांपल बताता हूं मैं। रेडियम देखा होगा सब लोग, रेडियम घर पे भी डेकोरेशन करते हैं कुछ, और व्हीकल्स को तो रहता है, एंड डेंजर सिंबल रोड पे भी लिखते हैं रेडियम। उस टाइम में क्या होता है, व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन द रेडियम, सपोज दिस इज द रेडियम, ठीक है, व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन द रेडियम all electrons getting excitation state, all electrons getting excitation state. When light is stopped, घर पे स्विच ऑफ करने के बाद पूरा डार्क, लेकिन इट इज द रेडियम इज गिविंग लाइट। क्या कब तक देते वो लाइट? पूरा whole night it will give? No, it will give few minutes. क्यों? देखो, when light falling on this, all electrons jumping into next levels, when we stop the light, these electrons are falling down into their natural virginal state. While electron falling from higher level to lower level, then what will happen? Energy releasing. That energy in the form of maybe heat भी हो सकता है, light भी हो सकता है। ओके, हीट नहीं दे रहे मतलब क्या होता है, लाइट फॉर्म में देते, ठीक है। सो दिस लाइट, वो लाइट भी 300 टू 700 बीच में है तो वो लाइट दिखते हैं हमको, उसके बियॉन्ड है तो वी कैन नॉट एबल टू सी, आइदर इट इज एमिटिंग और नॉट, वी डोंट नो। इन बिटवीन 300 टू 700 वो बीच में है तो यस वी कैन एबल टू सी। ओके, दिस इज द थिंग, डिफरेंट कलर्स ऑफ रेडियम्स। नाउ वो लाइट, if you take the prism here, it will give the some spectrum here, that is only emission spectrum, that is only emission spectrum। मतलब अभी सोर्स क्या हो गया, सोर्स एक्साइटेड सैंपल। फर्स्ट केस में सैंपल सोर्स क्या था, फर्स्ट केस में लाइट, ओरिजिनल लाइट सोर्स मेन लाइट। एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए सोर्स क्या था, एक्साइटेड सैंपल। Here radium is the excited sample, मतलब उसके पहले हम रेडिएट किया था, उसको लाइट फोकस किया था on the radium, then all electrons get excited, then we stop the light, then electron falling down, उस टाइम में ऑब्जर्व किया था वो स्पेक्ट्रम का। The radium giving light, if you pass through the prism you will get spectrum, that spectrum only known as emission spectrum। Clear? Emission spectrum and absorption spectrum। And here right, discontinuous and continuous also हो गया। और एक है लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम, नाम में है, लाइन मतलब एक लाइन्स होता है, बैंड मतलब बैंड एक लेंथी थिक लाइन होता है बस। और लाइन स्पेक्ट्रम होगा whenever we are taking atoms, if you are taking atoms, line spectrum। if you are taking molecules, molecule में many electrons are there, many more than one atom is there, in that case you will get band spectrum। band मतलब ज्यादा है, वो ज्यादा लेते तो ज्यादा मिलेगा, बस इतना सिंपल है। लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा, वो एटम लेते थे। ओके, इफ यू टेक एटम
the excited particle, whatever is there. That if you take atom, you will get line spectrum. If you take molecules, you will get band spectrum. Okay, these are the types. इंटरनेट जा रहे आ रहे क्या पता नहीं चल रहा है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ गए हम. You understood that line spectrum, band spectrum, discontinuous, continuous, absorption spectrum, and emission spectrum. Shravan, Siddhi.